You do not want hackers to hack it, right? What is it called? How will you hide it? Encodation. It is called encryption. Clear? So I will just put a security, and that security is managed by encryption. Okay? This is a very layman language. Alright? How the, so we will repeat. What matters is the identity of the client, the identity of a server, and from who is this person to whether he is authorized and authenticated to go there. Yeah, and then there will be an acknowledgement, and you will have to send it in a certain way, a protocol, right? And then what else? It has to be in a secure way, and you need a medium to do that. Here, when you are sending it, you can send anything, right? What you will send? You will send generally, you know, when you are doing. You can send text, you can send XML, you can send HTML, you can send FTP, the protocol, right? FTP means the file, yeah? And it could be an audio, video. Yeah? These are all, what are these called? These are called content type, very important word. Content type. Make sense? Okay, and for different things, they have made different protocols. HTTP to send this website, which can carry XML, text, images, right? FTP is for files. SMTP is for email, right? Likewise, for audio and video, we'll have to see which protocols. TCP, I think. TCP will support audio and video. Okay, I'm not sure 100%. We'll check on it. Okay, so yeah. So this common analogy is okay. We're all okay with it. So now we will try to understand. See, the basic, the biggest problem the software engineers will have is to grasp the basic of how the SSL works. That is where we lack that knowledge, and how it is translated into the code. Okay, next 10 minutes are little important. Try to pay good attention. Okay, because that is what the next information will help you to actually code the things. Okay, so we'll take it to a little technical now. Alright, so quickly, you have a client, so you are making an HTTP request. So in the HTTP request, so this is a server. Okay, what you will do is you will try to hit https://www.infokalash.com. Okay, so you are making a request. Okay, and this server will give you a response. Alright, so this server, we have hosted our www.infokalash.com on an AWS server. Okay, so the AWS server will have an IP address. Right, this server will have an address, and in this IP address there will be a location where our HTML is present. Do you agree? Where Nagraj has hosted this application. Okay, and this path, what we are saying, this thing, right? This thing is called resource, where our resource is present, our HTML pages are present. That is called resource. So it is all about finding the right resource through this what we are sending. That is why we call it as an URL, Uniform Resource Locator, or Universal Resource Locator, they say. My goal is, I'm sitting here and I'm trying to find a file and folder, that exact file in which it is like a Windows server. This itself is a Windows server. In the server, in what folder? This folder, inside that folder, and then I have my file. That becomes my path. That path is nothing but that URL. Simple. No rocket science. Clear? That is what you are, every time for the client you are trying to do these messages, you are only trying to get to the path of this. Simple. Clear? Okay? So in the Java what they made, I will come to that point. In the Java they made whenever you see the Java packages, they will give you an URL class. Okay? What is a class? I will also talk to you today, and it will become more sense. Yeah? So now, how does somebody know that www.infokalash.com, it has to go to this server?
AWS server? DNS. Right? It is called DNS, Domain Name Service Registration. Who manages this? Somebody is telling that info Kalesh is 100.00.59. This is an AWS server. Who is doing this mapping? Route 53. Route 53. Route 53 is what? AWS DNS management. So there are authorities in the world, like we took infokalash.com, we took this domain name, we call it as a domain name. We wanted a name for this company, a website name for this company. So there are so many authorities called GoDaddy, Google Domain providers, and there are so many dedicated authorities in the world. They have made the councils, and then they are there. These are the guys who give you these domain names. So we first took these domain names, we paid money to this, and this domain name was then mapped to this server. Earlier we were on E2E. It was mapped to us different address. And now different IP. Now recently Nagaraj Saurabh, they changed it to AWS. Does it make any sense? So your first step is to buy this, and then wherever you are hosting it, you will map it to that IP address. It is called domain to IP address mapping. Are we clear on this? Are we clear? Yeah. So this is also charged. Okay, we hold our domain names for InfoKalash. It is 2 years. We will be revising that, and after this, it is mapped to this. This is also charged. Clear? Okay. So now that you have got, what did you get? You got a very good name for what your website, and it is also mapped to a certain address, and in that your application is there in this location. Right? It could be whatever path it is. So once that is said, now you are allowing people, like anybody from anywhere, so many clients, either this is this, or it is a SOAP protocol, SOAP UI, or it is a Postman, or it is some other application. These are different clients, right? Yeah, these clients, this is a browser. So you are allowing this to make a connection with the server. And today's agenda is to understand how this communication happens between these two. Okay? So now this guy will, what he will do, HTTPS whatever infokalash.com, he will do it and this he will get it. But now when you are making, there is something called this yes, right? Yeah? Who gives this yes? You are saying that your website is secured. Who gives this yes? SSL. Who is doing that? Clients are everywhere, somebody. So you are a service provider. Most responsibility is always with the service provider. It is your website, right? You are giving it, and you want to ensure that people don't come and bombard you. You are not misused. So it becomes a responsibility of a thing from that perspective, where because you as a developers, you will be mostly working on the server side programming. You are the ones who are doing everything. Everything, whatever you are building, is you are building and keeping it here. People are going to use it. You are always the service provider. As a software developer, you are always a service provider. Unless you are building a client. Unless you are building this client products, mostly your job and role is going to be to build the services here. Do you agree? You are building an XML, you are building a Kafka pipeline, you are building a database. All are the services here, which are going to be used by somewhere. You are building a database, there is one, what do you use? Some Toad and SQL developers you use, and you are going to make use of service, client server communication. Is it making sense? So, who needs to safeguard this website now? Who needs to safeguard? You are the service provider, and you need to safeguard it from a wrong abuse. Make sense? Yeah? So, when you are making it for, so now the responsibility is always with the server, service provider, to safeguard and secure the website. Okay? So now how do they do that? So this server person, the server was there,
The website, we first what did we do? We took a info college domain, we mapped with this server. Now I need to secure this website. So what I will do is, I will say I need to secure this, and I will go to another authority called CA, Certification Authority. I'll come how this works. This is a certification authority. You go to a certificate authority saying that, okay, I want to safeguard my website. Please give me a certificate. There are certificate authorities, something like AWS has their own, Google is there, then there are networks, so many players are there. These are the genuine certificate provider who will give you the certificate for your website. Okay, are we clear? So now what does a certificate contain? What does a certificate contain? Why are they giving you the certificate? We know we are trying to secure our website. But why is it that there is a method of a certificate? We call it as a digital certificate. Somebody is giving you a certificate. So in the real life analogy, for you to remember, it's very simple. I am given a passport and that becomes my certificate. When I go abroad, they don't see me and say, oh, you are an Indian. How would they know that I am an Indian? I will show my passport and it becomes a certificate that I am an Indian. Does it make sense? In India, how do you know that you are from Karnataka? It's a little central document, yeah. Karnataka, yes. Yes, recently because they wanted to centralize the information. Generally, voter ID, PAN card, whatever, something, right? How do you know that you belong to this city? Language. What I speak or what is a certificate? Address, education. Good education certificate. No, you can go somewhere and then you can. Birth certificate, yes. Birth certificate, yeah, you would have taken birth in Delhi. Address, yeah. Permanent address. I mean, I prefer to go to Himalayas and make a permanent address. Huh? Present address. Yeah, I mean, you guys are close, but there is some authority. If you will go to Tahsildar and he will give you a Rahawasi Patrike. Now you get the importance of that, right? So many times they will go, he will give 100 rupees. वो एक बंदा बैठा रहेगा. His job is to give you that. Government has nominated, but then he charges us for it. आपको पता है रहवासी, अभी रहवासी बोलते हैं? आवासना. So that is the authority, that he is a certificate giving authority. That guy एक सिक्का डाल के तहसीलदार से 100 रुपए जाएगा. He is the authority. Who is giving those authorities? He is being recognized by the government to who can do it. So many, right? You go to municipality, they will not trust you on anything. They'll say, Ravase Patrike, Beveko, Adidra Mundikelsa. Then you'll go to the Tahsildar office and then get it. Aadhaar card these days, that is the idea of a central government. They want to centralize all this information. That's how databases are important, right? One Aadhaar card should suffice to your identity as an Indian, because there is so much of bribe. Especially for when you want to take the government schemes and poor, we are still okay. We are privileged. एक बंदा जो बहुत ही ज्यादा पुअर है and बहुत बूढ़े लोग रहते हैं, there's a government service and government office will be, one revenue office will be 5 kilometers, then Tahsildar office will be in another. It happens in my town. The Tahsildar office is in the town. It will be near to that where your community is set up, right? And the new offices are far. For age-old people, if they have to travel, for them 10-50 rupees is also difficult, right? And you ask them to go from there to there, they will take 2 days and they don't know how to write. Such a mess in the processes, right? So then how, as a government person, how do you get rid of all that? So Aadhaar becomes important, right? As central, this thing becomes very important. Are we clear on the certificate authority? So now, these are the certificates. See, you want to safeguard your citizens, so you are giving that kind of. अगर कोई बंदा बाहर से आएगा,
from non-resident Indian comes in, they can do a fuzzy Aadhaar, they can do all that, but still this system still checks. समझ में आ रहा है? I'll give you an instance. How the system, certificate authority systems, if you are at a government body, तुम आसानी से हम लोग citizens बोल सकते हैं कि अरे वो तो ऐसे ज़ेरॉक्स दुकान में जाओ, किसी का भी आधार बना लो. Okay? Yes, you can do it. फर्जी hacking तो सब जगह होता है. When you have a system, there will be thieves. कोई भी सिस्टम है, घर में भी होता है, everywhere, right? But how this kind of governance helps you to check the corruption is, वो बंदे ने जो मान लो जेरॉक्स दुकान में जाके उसने सर्टिफिकेट लिया है, ओके, फर्जी सर्टिफिकेट लिया है, जब भी देयर विल बी एन इवेंचुअल सिचुएशन, मान लो वो टेररिस्ट है एंड ही इज प्लांटिंग अ बॉम्ब और सम इंसिडेंट हैपन, यू कैन स्टिल बैक ट्रैक इट थ्रू दिस प्रोसेस. वो पकड़ा जाएगा बंदा. वो आधार कार्ड कहाँ से आया, वो जाके जेरॉक्स वाले को पकड़ोगे, राइट? क्राइम पेट्रोल देखते हो कि नहीं? उसमें यही होता है ना, पहले वो मोबाइल का आईपी एड्रेस देखते हैं कहाँ पे हो, और इस बंदे पे ये टाइम पे ये बंदा था, इसको सिम किसने दिया, उसके बाद वो ये इसका आधार आईडी है क्या, तो यू कैन इजीली गो एंड बैक ट्रैक. वो जाके सिक्योरिटी कैमरा देखते हो बाद में, कौन आया था इस टाइम पे, पुलिस का काम है ना, दे विल स्टार्ट बैक ट्रैकिंग द थिंग्स वेयर दैट कल्प्रिट विल बी कॉट. बट इफ दिस वाज नॉट देयर, it would be very difficult. chaos हो जाएगा ना सिस्टम में. You are bringing one step of, यहाँ पर भी अभी कोई भी वॉक करके आ सकता है, आके कुछ भी करके जा सकता है यहाँ पे, but still there is an eye which is kept, an extra eye security. वो बंदर को कपड़े पहना दिया तो वो डर लगेगा, कोई थोड़ा पसीना छोड़ के आएगा ना. You are still setting up the security layers where you are minimizing the risk. Risk is always there, but you are minimizing the risk. The same happens in the digital world also. Are you getting me? So that is why cyber security is very, 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 very important, right? Because this is what you do in the cyber security. Does it make sense? Are we good so far? Not boring, right? We're going well. Okay. So now let us reconnect everything. So हम लोग info कलश पहले हम लोग क्या करते हैं? We take the, ये वेबसाइट बनाना है मुझे, रिस्पॉन्स दायित्व किसके पास है? सर्विस प्रोवाइडर के पास है. डेवलपर्स तुम लोग वेबसाइट बना रहे हो, एपीआईज बना रहे हो, वो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम उसको एपीआई को सिक्योर करो. इट्स अ एपीआई सिक्योरिटी, इट्स अ योर सर्वर security at all. You are responsible for that. Client is not responsible. Client is just going to use your services. Make sense? Yes. तो अभी हम लोगों ने ये डोमेन खरीदा और हम लोगों ने ये सर्वर के अंदर मैप किया, मगर मैप करने के टाइम पे when I am hosting my website, I need to secure this website and hence I need a certificate from a certificate authority. Okay? So we have not still spoken what will the security have, certificate will have, but what we got to understand is the importance of the security. Okay? We getting it? Yeah, are we clear? Okay. Now let us try to understand what a certificate will have inside it. Okay. So we will have an analogy where we will try to understand. So this is a client, and this client is sending it to a server. Okay, there is a communication. So client says, "Hi server." Okay, it's a first time communication. Client says, you're making a connection, you're trying to build a connection with the server. Yeah. So when you're trying to build a connection with the server, so the first thing what happens is, that's the first level of security. It's not authentication and authorization, what you would have studied. It's the first level of security. Like वहाँ पे आ रहे हैं ना security guard. Once you comes in, we are yet to put the proper biometric. The moment maybe in 1 month down the line when you start working on the project, when they are responsible to publish your timesheets to our thing, to our partners and all, because they will start seeing your login, logout, because they are paying us for that, right? So once that starts happening, there is another security layer, second layer, where your in and out will be tracked. Does it make sense? Yeah. So अभी क्या हुआ? First time when we are trying to make a connection, ये जो बंदा है ना,
he will say, okay, take my certificate. He will give that certificate. This all happens at the back end. So for you it is so simple, right? www.google.com तुमने लिखा तो तुम्हें गूगल पेज आ गया, मगर 3-4 उसी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में 3-4 रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होते हैं. Does it make sense? We are not talking about sessions, we are not talking about cookies. This is a different information. I will come and connect it with the session and cookies. Okay? So the idea is how the communications are secured. We call it as a secure communications. Does it make sense? So first time when I go here, right? Sanjay, get the laptop. Do some. I'll connect it here. So first time when we are doing it here, it is always a. What happens is I try to make a connection. वहाँ से एक certificate आता है. Okay? वहाँ से एक certificate आता है. These days the clients are little advanced. Okay? The clients are little advanced, and what clients do is clients will already know. For example, अभी आप whatever clients are using. Google Chrome, Edge and other browsers, right? They already have the certificates for the famous websites like Google का हो गया, Facebook का हो गया. उनके पास already certificates रहते हैं. Are you getting it? Because these are the famous trusted websites जो लोग बहुत सारे use करते हैं. Like InfoColors आप देखोगे तो टाइम लगता है. InfoColors का वेबसाइट तुरंत नहीं आता है, गूगल का क्यों तुरंत आता है? जो क्लाइंट है, आप अभी जो क्लाइंट है आपका, वो दैट क्लाइंट ऑलरेडी ट्रस्ट दीज गाइस, google.com, facebook.com एंड ऑल. उनके पास ऑलरेडी क्लाइंट, जब आप डाउनलोड करते हो न्यू वर्जन ऑफ गूगल क्रोम, दे से राइट, गूगल क्रोम इज बाय हूम? गूगल. तो वो लोग ऑलरेडी सर्टिफिकेट डाल के तुम्हें भेज देते हैं. उनका ही ब्राउजर यूज कर रहे हो ना तुम, तो उसके पास सर्टिफिकेट है. उन्होंने उससे उनको क्या फायदा हो रहा है? उनका वेबसाइट दे आर एबल टू टेक दैट मेनी नंबर ऑफ फास्ट. वही गूगल क्रोम को तुम एज में डालो, यू वुड हैव एक्सपीरियंस ऑफ दिस. गूगल क्रोम में तो गूगल ऐसे ही वेट करते रहता है. मैंने दबाया वो आ जाता है ऐसे कि मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ, बोलो क्या करना है, राइट? दैट इज द फास्टनेस. बट वेयर एज यू ट्राई इट इन अदर ब्राउजर्स, नो. तभी तुम लोगों को गुस्सा आता है, गूगल वहां पे तो इतना आता है, यहाँ पे क्यों नहीं आता? यू हैव एक्सपीरियंस दिस अननोइंगली. मेक सेंस? InfoColors का तुम नए ब्राउजर पे तुम खोलो, नहीं, वो 2 मिनट लगेगा. क्या हमारा वेबसाइट इतना नहीं, वहां पे कम्युनिकेशंस हो रहे हैं. इट इज ट्राइंग टू ट्रस्ट. HTTPS आर ऑलवेज स्लो. फंडा क्लियर? डज इट मेक सेंस? तो सर्टिफिकेट अथॉरिटी होता है और वो सर्टिफिकेट देता है. तो फर्स्ट टाइम व्हेनेवर यू आर मेकिंग अ कम्युनिकेशन, अ सर्टिफिकेट इज कमिंग, राइट? मच बिफोर you are trying to, whenever you're trying to do the connection for the first time, एक सर्टिफिकेट आता है. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ये सर्टिफिकेट के अंदर होता क्या है. व्हाट इज दिस डिजिटल सर्टिफिकेट? यस, एग्जैक्टली. सो वहां पे एक की होता है. ओके, इट इज कॉल्ड अ पब्लिक की. So any idea what is the public key? मुझे पानी पीना था तो I asked a question. So yeah, what is the public key? Key क्या होता है? क्या है key in a very general terms? What is a key? Why do you need a key in life? Combination of alphabet. नहीं, रियल लाइफ में क्यों यूज करते हैं? To open the lock. Just to open the door. नहीं, open the lock. Hide something, right? You need a key to hide something. वही है ना. तुम्हारे घर पे की ताला क्यों लगा रहे हो? Because you do not have a trust on others. कोई आके तुम्हारे सामान लेके जाएगा. You don't trust people, right? So that's how it is. तुम अपने मोबाइल पे लॉक डालते हो, घर पे लॉक डालते हो, अकाउंट पे लॉक डालते हो, मुंह पे लॉक डालते हो. जितना बोलना है उतना बोलना है, ज्यादा ही बोलना है, राइट? सो दैट्स हाउ इट इज, राइट? दैट्स हाउ वी ह्यूमंस आर, राइट? की इज एवरीवेयर. तो अभी डिजिटल में की क्या होता है?
डिजिटल में की क्या होता है? डिजिटल में की ये होता है, वहां पर भी की आ रहा है where they are trying to hide something. What is that they are trying to hide? की आ रहा है. What is that they are trying to hide? Private information. What information they are trying to hide? Private information. सोचो, what is that they are trying to hide? I don't know. What? क्या? क्यों की डाल रहे हैं? Once again, your knowledge of server तुम हो. You guys are the server programmers. You are serving something. तुम क्या सर्व कर रहे हो लोगों को? You are serving a website. वेबसाइट में होता क्या है? वेबसाइट में इंफॉर्मेशन होता है. इंफॉर्मेशन किसका इंफॉर्मेशन हो सकता है? कुछ भी हो सकता है. उसका बॉडी होता है ना. That what she said is right. There is an entire body. So तुम्हें अभी क्या हाइड करना है वो तुम डिसाइड करते हो, right? Do you want to hide only URL parameters, HTTP, or do you want to encrypt the entire information what you are sending? तुम एक लेटर भेज रहे हो ना, यहाँ से यहाँ लेटर होता रहा है, ये भेजा, ये वापस लेटर भेजा है. भाई मुझे इडली दो, ये इडली दे रहा है, मगर वो इडली पूरा इंक्रिप्टेड ही होना चाहिए. किसी को समझ में नहीं आना चाहिए कि आप इडली खाने वाले हो. समझ में आ रहा है? ठीक है, राइट? कम्युनिकेशन पता चलेगा. कोई हैकर को ये पता चलेगा कि ये यहाँ से आईपी एड्रेस जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, बट उसको ये पता नहीं चलेगा कि आप इडली खाने वाले हो. ठीक है, दैट विल बी एनक्रिप्टेड. योर बोथ बॉडी, हेडर, एवरीथिंग विल गेट एनक्रिप्टेड. वो एनक्रिप्शन कैसे हो रहा है? कौन करा रहा है वो एनक्रिप्शन? हु इज डूइंग दैट एनक्रिप्शन? एग्जैक्टली. वो सर्टिफिकेट के अंदर जो की होता है ताला, उसमें एक एल्गोरिथम रहता है. तो की इटसेल्फ विल टेल यू कि व्हाट एल्गोरिथम से वो की बनाया है. थोड़ा सा शांति से सोचो. इट्स नॉट वेरी, इट टेक्स टाइम टू कनेक्ट द थिंग्स. पर्सपेक्टिव दे रहा हूं सो दैट यू विल नेवर एवर फॉरगेट इन योर लाइफ. आप सर्वर हो, आपका दायित्व है कि इंफॉर्मेशन को एनक्रिप्टेड से भेजना है. फर्स्ट टाइम जब भी ये कॉल करे, कोई क्लाइंट विल कॉल यू, यू विल सेंड देम अ सर्टिफिकेट. भाई सर्टिफिकेट ले ले, ताला ले ले, मैं तेरे को इंफॉर्मेशन भेजने वाला हूं, अगर तेरे को रीड करना है तो इसी ताले से रीड करना है. समझ में आ रहा है? Like hash key. टेक्निकल मत जाओ. आई विल टेल यू द टेक्नोलॉजी. ट्राई टू अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन. हु इज डूइंग इट? किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अरे समझ, वेरी सिंपल. आप सर्विस भेज रहे हो, आप हाँ ओके, ओटीपी इज वन. कोई जोमेटो वाला, ओला का, ओला इज द राइट. आपने ओला का सर्विस लिया, वो आके ऑटो वाला, कैब वाला आते ही वो आपसे ओटीपी मांगेगा. वो की मांग रहा है? आप ही वो करके क्या, संजय ने बुक किया, ऐश्वर्या चढ़ गई. नो, दैट्स नॉट द राइट वे. तो उसी के पास वो ओटीपी है. ऐसे सब जगह आप देखोगे तो दैट काइंड ऑफ सेटअप इज देयर एवरीवेयर. हाउ डू वी नो दैट इट इज ओनली यू, एन ऑथराइज्ड पर्सन, ऑथेंटिकेटेड पर्सन? मेक सेंस? तो वो सर्टिफिकेट आया, सर्टिफिकेट के अंदर आपने क्या दिया है? आपने की दिया है. भाई ये की रखे रहे तू, मैं जो इंफॉर्मेशन भेजने वाला हूं, मैं एनक्रिप्ट करके भेजने वाला हूं, और इस की से खोल के तू इंफॉर्मेशन देख. डज इट मेक सेंस? क्लियर? ओके. तो ये जो की रहता है वो सर्टिफिकेट के अंदर रहता है. ये जो सर्टिफिकेट आप बना रहे हो ना, उसके अंदर आप क्या भेज रहे हो? एक की बना के भेज रहे हो, और वो की क्या हाउ विल दैट की हेल्प यू टू अनलॉक द इंफॉर्मेशन विच इज एनक्रिप्टेड फ्रॉम द सर्वर. अभी आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, सर आपने तो सर्वर का बोला, मगर हम भी तो HTML फॉर्म भेजते हैं क्लाइंट से, उसको कैसे करोगे एनक्रिप्ट? दैट इज एन ऑब्वियस क्वेश्चन नाउ, राइट? कम्युनिकेशन एक ही जगह नहीं है ना, आप रिक्वेस्ट भी कर रहे हो ना.
Now what I spoke is the first time communication. Are you getting me? I am talking about the first time communication. अभी आप सेकेंड टाइम कम्युनिकेशन कर रहे हो. सेकेंड टाइम आप जब कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आपके पास पब्लिक की है ना. ये क्लाइंट भी इतना होशियार है कि वो पब्लिक की को लेके ही वो भी एनक्रिप्ट करके भेज देगा वापस, उसी को लेके, वही एल्गोरिथम को लेके. समझ में आया? आप जब रिक्वेस्ट भेजोगे नेक्स्ट टाइम, सर्टिफिकेट आ गया था, आप अभी जो भी भेज रहे हो सर्टिफिकेट में पब्लिक की आया. अभी ये पब्लिक की को लेके इसने क्या किया, क्लाइंट ने क्या किया, एनक्रिप्ट किया. पहले रिक्वेस्ट को एनक्रिप्ट करके सर्वर को भेजा. अभी सर्वर उसको डिक्रिप्ट करेगा, वापस कर देगा. एक लूप बन गया. समझ में आ रहा है? क्लियर? ओके. अभी आई हैव नॉट इवन स्पोकन ऑन द प्राइवेट की. आई विल कम टू द प्राइवेट की. पब्लिक की का समझ में आया? ओके. तो इसको क्यों इन लोगों ने पब्लिक की बनाया, प्राइवेट की बनाया? आई विल टॉक अबाउट इट, एन एनालॉजी. So I don't know how many of you have experienced in your life when you go to a bank, when you are taking a security, ये क्या होता है, security deposit, not security deposit, ornaments को रखते हो ना, लॉकर नाम में ही है लॉकर. तो वहाँ पे जाते हो तो उनका प्रोसेस क्या है पता है? They would have given a key to us, okay? हम लोग जाके वो घर पे रखते हैं. एवरी टाइम आई वांट माय ऑर्नामेंट्स, आई विल गो, आई विल पुट माय की फर्स्ट, एंड सेकंड वो वहां का मैनेजर रहता है, वो आके अपना की डालेगा, तभी वो खुलेगा. 2 की से खुलेगा. मान लो कल को किसी ने मेरा की चुराया, मेरे बेटे ने चुराया, मेरी बीवी ने चुराया, दे वांट दैट प्रॉपर्टी, राइट? दे गो एंड डू इट. तुम्हें एक और की चाहिए ना, वो मैनेजर का अप्रूवल चाहिए, तब तक वो नहीं खुलेगा. तुम्हारे ऑर्नामेंट्स जो तुमने रखे हैं, तुम्हारा वेबसाइट जो तुमने यहाँ पे रखा है, सर्वर में जो तुमने रखा है, या ये सिक्योर्ड कैसे हो रहा है? वो 2 की से हो रहा है. भले ही एक पब्लिक की है उसको ओपन करने के लिए, यहाँ पे ये तब तक नहीं खुलेगा जहां पे वो प्राइवेट की तब तक नहीं है, वो नहीं खुलेगा. तो कोई बंदा, तीसरा बंदा आके वो ट्राई कर रहा है, ये पब्लिक की से ही वो जाके इसको तुम्हारे वेबसाइट को जाके हैक करने की कोशिश कर रहा है. वो कर नहीं सकता है, बिकॉज इट ऑल्सो नीड्स सर्वर लेवल सिक्योरिटी होता है. यहाँ पे उसके लिए एक अलग सा एल्गोरिथम रहता है. प्राइवेट की, पब्लिक की समझ में आया? एनालॉजी समझ में आया? ओके. एंड कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है समझ में आया? अभी जितने सारे क्लाइंट्स हैं तुम्हारे, इनके पास सर्टिफिकेट है, सबके पास सर्टिफिकेट है. इसने पब्लिक सर्टिफिकेट पब्लिकली इसने दे दिया कि भाई जाओ यूज करो. जिन जिन के पास, मैंने मान लो ये यहाँ पे मैं कनेक्शन बना रहा हूँ, यहाँ पे बैठ के, मान लो मेरा सर्वर बोल रहा है कि मैं जम्मू कश्मीर से रिक्वेस्ट नहीं लूंगा, बिकॉज इट इज अ वेरी हाईली sensitive area and I'm not going to take any request from this region. Just giving you an example, okay? वो IP एड्रेस जम्मू कश्मीर के रीजन से आ रहा है, तो ये बंदा सर्टिफिकेट ही नहीं भेजेगा. नो, आई विल नॉट सेंड यू द सर्टिफिकेट. पहले लेवल पे ही शॉर्ट आउट. समझ में आ रहा है? अंटार्कटिका से मुझे रिक्वेस्ट नहीं लेने हैं, मैं वेबसाइट सर्वर्स बना रहा हूँ. तुम चॉइस करोगे कि नहीं, मुझे ऑस्ट्रेलिया के सर्वर से मुझे नहीं आना है, बिकॉज आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ मालवेयर एक्टिविटी, सस्पिशियस एक्टिविटी. आई डू नॉट वांट टू गेट द रिक्वेस्ट फ्रॉम दिस रीजन. मुझे फायरवॉल डालना है, तो सर्वर विल ब्लॉक ऑल दोस रिक्वेस्ट व्हिच आर कमिंग. देयर इज यू आर नॉट ऑथराइज्ड. फर्स्ट लेवल पे ही हम लोग ने डिक्लेयर कर दिया. सर्टिफिकेट का इंपॉर्टेंस समझ में आया? ओके. सो नाउ व्हेन यू डू दैट, when सर्टिफिकेट के अंदर, but now when server trusts you, इंडिया से आ रहा है and certificate comes, it also contains what? पब्लिक की. तो आप जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको सेम ही पब्लिक की रहता है. ओके. एंड दैट पब्लिक की विल हैव एन एल्गोरिथम. उसके अंदर इट विल स्पेसिफाई एन एल्गोरिथम हाउ यू आर गोइंग, हाउ दिस क्लाइंट इज गोइंग टू एनक्रिप्ट द डेटा एंड सेंड द डेटा टू सर्वर. ऐसे कम्युनिकेशन होता है. समझ में आया? आगे क्लियर? नाउ यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन से, ठीक है सर पब्लिक की आ गया और एनक्रिप्ट करके भेज रहे हैं, तो इसको भी हैक कर सकते हैं ना? इसमें तो लिखा ही है कौन सा एल्गोरिथम है, तो क्यों हैक नहीं कर सकते?
मगर अगर मैंने algorithm सीख लिया तो मैं हैक कर सकता हूँ ना. Any answer, guesses? Why it is difficult? People do hack that also. It's very difficult though. Why is it that they will not be able to hack? Because of strong encryption. Encryption of this. Decrypt कर सकते हैं ना. When this guy is able to decrypt it, why is that hackers will not be able to decrypt it? They will put the session on it. Then, this time only it will be alive. After some time, after sending the request, that algorithm itself will become dead. You are right. Yeah. So algorithms होते क्या है? Just want to give you the feel of an algorithms. Okay. Algorithms ऐसे लिखे जाते हैं. It's not very obvious for you to catch a pattern. It is a random generation. Unless you know how that randomly it is generated. Like मान लो nanosecond time से generate हो रहा है. मान लो if it is an obvious encoding, you can easily decode it. Are you getting me? It's a very obvious encoding. मैंने मान लो A B C D है. A को मैंने ASCII character दिया 65 and I'm encoding it. It is very easy for you to decode. International politics चल रहा है. International politics में I need to encode thing. अभी ऑफिस में भी तुम लोगों ने कुछ तो encoding किया होगा. Like where not many will understand, you will be talking in that encoded way. Are you getting me? Whenever you are trying to encode, you will always try to encode in certain way where others cannot understand that, where it is very difficult for others to encode. Are you getting the point? So वो जो algorithms रहते हैं, these are not the algorithms where you can decode them easily because they are so randomly generated. And जो वो hacker, if he tries to really decode it, it will take that kind of time for him. By then वो सेशन टाइम आउट हो जाता है. I'll come to the session and cookies now. Are you getting the point? If he is trying, if he is so intelligent to decode, he can. If he is able to decode with the public key itself, certificate authority say if the hacker is so strong, they will do it. HTTPS are also hacked. It's not that they are not hacked. Okay, but then they will just go and स्टार्ट साइबर सिक्योरिटी में क्या करते हैं, वो लोग जाके वो एल्गोरिथम को देखते हैं. क्या यूज किया था हम लोगों ने एल्गोरिथम? ये एल्गोरिथम ने ये पैटर्न बनाया था डेटा का, उसने ऐसे एनक्रिप्ट किया था और किसी बंदे ने उसको डिकोड कर दिया. सीआईडी की तरह है. समझ में आ रहा है? पब्लिक की है ना. दिस इज अवेलेबल. योर सर्टिफिकेट इज अवेलेबल पब्लिक. एनीबडी कैन डिक्रिप्ट इट provided he has that kind. तो assurance कहाँ पे है, security कहाँ पे is what the point is. Are you getting me? आप public key से ही encrypt करके भेज रहे हो ना. Then anybody can do it, but then it will be that encryption algorithm will be so strong that it will be encrypting the data in a certain pattern. अगर even if you write a program to decrypt it, he will have to write it in a loop. And before he even tries to decode it, तब तक ये इसका सेशन टाइम आउट हो जाता है. We will talk about session. What is session? I'll come to that. समझ में आ रहा है? तब तक कम्युनिकेशन खत्म हो गया. वो टैप करने की कोशिश कर रहा है. वो सर्वर जाके सर्वर ने बोला नेक्स्ट टाइम तू आ रहा है भाई, मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा. सस्पिशियस वहां पे मालवेयर वो लोग कर देते हैं. अभी तो सेम रिक्वेस्ट से तू आया था, अभी क्यों आ रहा है वापस? सो वहाँ पे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स होते हैं. वो फायरवॉल बहुत स्ट्रांग होता है, छोटा होता है. दे इमीडिएटली कैप्चर सस्पिशियस एक्टिविटी. ये जितना हैक करने की कोशिश कर रहा है उतना ही सर्वर साइड पे ज्यादा फायरवॉल्स बनते जाते हैं. दैट इज व्हाई लॉट ऑफ योर एंटीवायरस एंड एंटी दिस थिंग्स सर्वर्स को बहुत सेफगार्ड करते हैं. दैट इज व्हाई इन साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड मशीन लर्निंग इज वेरी वेरी फेमस फॉर फ्रॉड डिटेक्शन. डज इट मेक सेंस? फील आ रहा है? यू गेटिंग दैट? समझ में आ रहा है ना? हाँ. So that is not a zone. Someday I will also talk about the algorithms, what algorithms are used, how it is done inside. But for that you will have to finish your algorithms, what you are doing, right? Your logical programs. You will have to finish all of that, and then you will become closer. You start appreciating the algorithms. Simple hash code
normal decoding, encoding, decoding will not help you, but then if you want to embrace, appreciate the nature of the algorithms, encryption, उसके लिए हम लोग को थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा, which we'll do it later. Make sense? Okay. So we understood the certificate authority. We understood what did you understand? We understood public key and private key and the importance of the certificate. Okay. So काफी चीजें क्लियर हो गए, डोमेन क्लियर हो गया, आईपी एड्रेस क्लियर हो गया, यूआरएल क्लियर हो गया, सर्टिफिकेट क्लियर हो गया, प्राइवेट क्लियर हो गया, पब्लिक की क्लियर हो गया. ओके, सो नाउ अभी बचा है आपका ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन. ऑलराइट, सो ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन. व्हाट इज ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन? ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन इज समथिंग, ऑल्दो यू आर प्लेइंग आउट द फर्स्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी, जो कि आपका ये है, व्हाट इज दैट? सर्टिफिकेट बेस्ड अथॉरिटी है, safeguarding it. Now you would want to make it a little more secured with the user sessions we say. You are making a website. For a normal website it is very clear. We have not made any users and all here. हमारे वेबसाइट में www.infocolors.com, it's static pages and we have not made any user accounts because it's just a static information which comes and displays. There is no वैसा वाला एक्टिविटी नहीं है कि जहाँ पे डेटाबेस पे जाके they will do more harm to the servers, right? So when you are building the applications, what you will do, you will make it an account based applications we say. What do we say? Account based. तो क्या होता है, इसलिए पहले क्या करते हो तुम लोग? रजिस्ट्रेशन करते हैं, यूजर नेम एंड पासवर्ड, राइट? सो दैट इज द ऑथेंटिकेशन फॉर यू. सो यू विल मेक अ यूजर नेम पासवर्ड. ओके, जब भी आप यूजर नेम पासवर्ड करके सबमिट करते हो, या सो आई पुट इट हियर, यूजर नेम पासवर्ड. अब जब भी इसको सबमिट करते हो तो ये एक रिक्वेस्ट, when request goes, this is after all your certificate, that thing first level has passed. This is at the second level. When you are sending it, यहाँ पे क्या होता है, when you are trusted, this in the application what you will do, these guys you are trying to build, right? Sorry, I have like today. You are trying to build this authentication and authorization. I told you, right? Java authentication and authorization services we say. What you generally do is, whenever a request comes in, yeah. No. Thank you. Thanks. So whenever you are sending it, this is the next level of security. What will happen is, as an application, once again you are the server guys, you are the server programmers, you are taking the responsibility to safeguard your services. It is always the server responsibility. I have kept on repeating, this is very important for you to fix this in your mind, how the communication happens. You have to take that responsibility. Does it make sense? Okay, so whenever you are doing this, so here what happens is, whenever a request comes in, what server will do is, server is now going to respond, but server will make an ID for you. Call this client, we call it as a client. Client के लिए we will make an ID, that is called, here we will call it as a session ID. It will just take, okay, Mozilla से आया है, Google Chrome से आया है, ये IP एड्रेस है, इसके लिए एक ID बना के हम लोग वापस भेज देते हैं. वापस जो भेज रहे हैं उसको कुकी बोलते हैं. It is called a session, but it is stored as a cookie here. Cookie at a client side. Is it clear? This is the next level of authentication, where server, once again server is taking the responsibility to make a session ID and give it back to the client. क्यों दिया सर्वर ने, क्यों बोला? सर नेक्स्ट टाइम आप जब भी आ रहे हो ना, you take this token and come and we will serve you faster. You go to this mechanism is in we call it as a token based mechanism. I will not talk on this now today, token based mechanism, but
the analogy is there. I'll come to that point. So you go to hospitals these days, they will ask you 300 rupees. Yeah, they'll ask 300 rupees, and what they will say, you are allowed to come back to us for the next 45 days or 30 days. That is the mechanism. Okay, so next time you need not have to fill that registration, and you need not have to waste the time. So that is a session for you. Although this analogy is more towards the token, don't worry, I'll come to that. Token will not capture today, but we'll talk only on the session today. So whenever you go back here, right, we go back to this and they will give you the session ID, and इसके लिए वो लोग session का time लिखते हैं 2 minutes. Yes, this one session ID is available only for 2 minutes. Maybe Facebook may they keep it 20 minutes. I really don't know. I think Facebook they will keep a more larger session because you're doing a social activity there. बाकी अगर बैंक का तुम जाओगे ICICI, HDFC and all, I think they keep very less because suddenly time out हो जाता है. So they do not want to keep, right? अगर तुमने एक्टिविटी नहीं किया है and you go and click a submit, इस सेशन आईडी से ये कुकी के अंदर सेशन आईडी रहता है, तुम जाके इसको बोलते हो और वो बोलता है योर सेशन हैज बीन टाइम्ड आउट. वो ऑथेंटिक करके बोलता है नहीं, बिकॉज क्या हो सकता है, तुम वेब ब्राउजर दुकान में सर्फिंग कर रहे हो, तुमने लॉग आउट नहीं किया, ऐसे चले गए, somebody else comes and he does it after 20 minutes, you are going to, your system is not abused. Make sense? सेशन आईडी एंड कुकी. So इसका एक लाइव हम लोग कल देखेंगे. I'll see if Nagaraj, Pushpa, if they can show us the live how this happens in Informatica or some application. That's the goal. Where you get to see all this. You can see in your client. You can easily see certificate. You can easily see a session. You can see a cookie IDs. Everything you can see in your client. जैसे आ रहा है. Server side also when you program it, you'll get to know. Okay, so all program. जो भी जितना भी theory बोला है, your attempt should be to see it live. Actually इसमें कैसे हो रहा है, that should be your goal. Okay, so I'll just finish one thing, one final thing, just to give you a little program experience. Okay, so what happens is, see, it's very simple. Information है ना, it's all about information. हम लोग information को कैसे भेजते हैं हम लोग? अभी मुझे इंफॉर्मेशन को भेजना है, क्या होता है इंफॉर्मेशन, क्या होता है, नेम कूलन रमेश, एड्रेस लाइन 1 whatever, एड्रेस लाइन 2 whatever, एड्रेस लाइन 3 whatever. इस ऐसे ही इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं ना, दिस इज व्हाट द इंफॉर्मेशन वी आर सेंडिंग. और मुझे मैसेज, हेलो इन्फो कलश, आवर मेंबर्स do good, we will grow together, whatever. I'm sending a message, big message. It is called key value. इसी को मुझे अगर मैं XML बना दूंगा तो क्या होगा, क्या आपका XML हो जाएगा. This we all know, right? Okay. अभी इन सब को मुझे साथ में डालना है. डेटा स्ट्रक्चर है ये. This is a variable. This is what? This is the, what do you call this? This is a name of that variable. Okay, this is a value of it. मगर ये सबको मुझे डालना है तो मैं इसका एक क्लास बना दूंगा. जस्ट ग्रुपिंग इज अ क्लास, दैट्स इट. ये सबको मैंने एक क्लास बना दिया. मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको? Why am I letting you know is anything, everything you start seeing it like that. Everything is a text. वो टेक्स्ट बाइनरी में कन्वर्ट होके जा रहा है डेटा, बट डेटा स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं. व्हाट आर दोस डेटा स्ट्रक्चर्स? लेट अस अज्यूम आई हैव http://www.infocolours.com, राइट? ये https है ना, ये है URL. इनके लिए उन लोगों ने एक क्लास बनाया. ये सेशन वापस आ रहा है, उसके लिए उन लोगों ने एक क्लास बनाया, http session. They made something called URL. They made a session called cookie. I mean, they made a classes called cookie. Okay, or they made a class called HTTP request. They made a class called HTTP response. They made a class called HTTP header. Simple. ये this information जो text में आ रहा है, इसको आप कैसे लोगे? Java में it's all about object. That's it. Object is what? It is just grouping. 10 चीजों को लेके मैं एक के अंदर डाल के उसको एक क्लास बना दूंगा. That's it.
It's a data structure in the data. अभी मैं उसके अंदर इंट भी डालूंगा, अभी मैं फ्लोट भी डालूंगा, मैं स्ट्रिंग भी डालूंगा, नहीं तो मैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट भी डालूंगा, नहीं तो मैं एक कलेक्शन डालूंगा, उस कलेक्शन के अंदर एक और कलेक्शन है, उस कलेक्शन के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है. दैट इज माय चॉइस. It's so flexible. I can make a data. I can invent a data structure with the object orientation. An object is what I can make a data structure of any type I want. मुझे जैसे चाहिए I can तोड़ मरोड़ के मैं I can make the structures. Sense मिल रहा है? That's what is a class. Okay. So they made logically उन्होंने सोचा. These are very important words, right? HTTP सेशन है, URL है, कुकी है. सो इसके अंदर ये क्लास के अंदर एक गेट मेथड रहेगा. गेट मेथड में जाके वो गेट आईपी एड्रेस करोगे तो आईपी एड्रेस मिलेगा तुम्हें. कुकी ये हेडर के अंदर जाके वो बॉडी को लेके आना है. जस्ट गेट सेट दैट्स इट. इट्स जस्ट अ डेटा कैरियर. Does it make sense? Does it make sense? So don't get panicked. Suddenly एक पैकेज देखा, पैकेज के अंदर एक क्लास नेम देखा, तो do not get panicked. ये क्या कोडिंग है, मुझे तो सिखाया नहीं है. No, just apply common sense. Take that name and then apply it to your knowledge. Where what is an URL? Why did they make this class? Somebody has made a class to carry certain information. ये क्लास के अंदर क्या होता है? What are my variables in that class? What is that I can get? What is that it is helping me? Does it make sense? That is what it is. अगर जावा नहीं होता तो तुम लोग ऐसे करते, XML में तुम भेज रहे हो, that's it. जावा आया है, it is giving you a more, वो डिब्बा दे रहा है, वो डिब्बे के अंदर ये सब को जाके डिब्बे के अंदर डालो. ये डिब्बे के जाके एक और क्लास में डालना है, उसको डालो, that's it. For that तुम्हें थोड़ा सा डिजाइनर, once again that example is more important. मैं लड़कियों का बैग बोलता हूँ ना, it's very important. You have a bride बोलते हो ना, you have a bride and she is getting ready for her marriage day, very important day. She will organize her suitcase in a very neat way. Like all her collections of ornaments, she will put it in one box. She has a big suitcase. She will put all the ornaments in one box. She'll put all her cosmetics in another box. She'll put all her sarees etc. in another thing. मगर एक बॉक्स के अंदर जो ornaments के ना, she can keep in another box. देखा होगा old एक बॉक्स रहेगा, उसके अंदर एक और बॉक्स रहेगा, एक और बॉक्स, then you open it, you get it. That's what it is. Not these days girls, but I have seen my mom. हमारे ट्रेजरी में आप जाओगे तो एक रखा रहेगा, उसके अंदर एक और वो कभी हमको मिलता ही नहीं यार. We will keep yelling at them, right? कहाँ है वो, उसके अंदर जा. You would have hidden so much. That's what. And only they are the key for that, right? Only when they say we have to navigate that way and go and get it, right? और हम लोग क्या करते हैं, उसको निकाल के आगे रख देते हैं, नहीं तो फेंक के चले जाते हैं. We do not know the importance of it. Does it make sense? So you are setting something to whatever hierarchy we say, object hierarchy. We are setting deeper into the hierarchy. Of course, for you to get, you have to go deeper into the hierarchy to get it back. As simple as that. Does it make sense? So we'll stop here for this thing. I'll see if I can do one more session to show you the reality and as a repetition for you, and then things should become simple. Now see it from this perspective. A whole lot of people, you are writing these user session ID, and your HTTP headers and all that, right? So all this should become more meaningful now when you write the programs. Okay? All right guys. Yeah. Thank you. Thanks for your time.